Today we'll learn a new topic, that is index. Index is the part of your SQL. In this chapter, we are going to learn why do we need index, how can we create index, and what are the benefits that index gives you. But before that, let us understand the working of our SQL engine, or you can say Oracle engine. What actually happens when we give the query to the Oracle engine? So when a select statement is fired for a record, the Oracle engine must first locate the table on the disk. सबसे पहली चीज आपका Oracle engine क्या करता है? टेबल को लोकेट करता है. As I told you, the tables are your permanent storage area and that tables are stored in your hard disk. The Oracle engine reads the system information and finds the start location of the table's record on the storage media. That means what? It is going to locate the table on your storage media, that is starting location it will find. And then it will perform a sequential search. Sequential search means what? It will search for the record one by one, scanning each of the value in the table so that it can find the value which is requested by the user. So let us understand grammatically how it works. Suppose I have fired the query select star from student where roll number is equals to 12. Now I want the specific record of roll number 12. I don't want the data of all the students. I only want the data of roll number 12. So there is some hard disk. On the hard disk there may be many tables. Now Oracle engine will do what? First thing it is going to do, it is going to locate the table. That is which table? Student table. So it is going to locate the student table. As soon as it found the student table, it is going to search sequentially one by one all the records until it gets what? Which record? Where the roll number is equals to 12. That means what? There is wastage of time. Why wastage of time? If the table contains large amount of data, then in that case the Oracle has to perform a sequential search. So it will take time to reach the specific record which is specified by the user. तो आपको याद रखना है, अगर आपका Oracle sequential search perform करता है तो ये बहुत टाइम लेगा अगर आपके टेबल में बहुत सारा डेटा है तो. So that means instead of searching the table records, what you can do, you can sort the data and then you can store the data. Now this can be done through index. If I give you a simple example, when you are reading a book, what do? If you want to go to a particular topic, you go to the index. First thing what do? You go to the index and within the index you search for the particular topic. And how the search is performed? You just go to the alphabet which the topic relates to, and from that alphabet you directly get its address. That means what? The पेज नंबर. आप डायरेक्टली क्या सर्च करोगे? इंडेक्स सर्च करोगे. इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करोगे, लेकिन टॉपिक के लिए आप क्या सर्च करने वाले हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर्चिंग परफॉर्म करोगे. एंड जैसे ही आपको आपका टॉपिक मिलेगा आप क्या करोगे? उस पेज नंबर को सर्च करके डायरेक्ट वो पेज नंबर पे जाओगे. आप एक एक पेज को टर्न करके देखने वाले नहीं हो कि कौन से टॉपिक, कौन से पेज पर आपका टॉपिक है. तो ये चीज आपकी आसान क्यों हो गई? क्योंकि आपको क्या दे दिया गया है? ऑलरेडी इंडेक्स दे दिया गया है. सिमिलरली आपका डिक्शनरी होता है, टेलीफोन डायरेक्टरी होता है. टेलीफोन डायरेक्टरी में भी क्या होता है? फोन नंबर्स दिए गए होते हैं एंड नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया गया होता है. तो आप क्या सर्च करोगे? डायरेक्टली अल्फाबेट सर्च करोगे एंड अल्फाबेट के रिलेटेड सारे नाम आ जाएंगे और उस नाम के रिलेटेड व्हाट यू कैन फाइंड द phone number. So that is easy. That means what? You don't have to search sequentially all the data if you are given the facility of index. And indirectly index is what? It is an ordered list of contents. Means what? It contains some information which is sorted in a particular order. Normally it is alphabetical order, and along with that information what is stored? The actual address is stored. So indexing is what? It is a access strategy. That is a way to sort and search the records in the
table. Basically indexing का मतलब क्या है? It is nothing but more than a access strategy in which some data is stored in a sorted manner so that the searching of information becomes easy. Now that means what? There is some table on your hard disk and related to that table some index is also maintained. So when you are searching or when you are asking the Oracle engine to fire a query, the Oracle engine is not going to search the table, it is going to search the index if there is an index for your table. Okay, सो इंडेक्स के अंदर बेसिकली होता क्या है? इंडेक्स इज अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स independent of the table. Means what? It is storing separately in the hard disk. And first column it is going to contain sorted data. Second column it is going to contain address field. Why it is going to contain address field? Because it identifies the location of the record in the Oracle database, and this address field is called row ID. Remember, the address field of the index is called row ID. Let us understand how does the index work. When the data is inserted in the table, okay, the Oracle engine inserts the data value in the index also. So that means what? दो काम एक साथ हो रहे हैं. टेबल का डेटा टेबल में भी स्टोर होगा एंड इंडेक्स में भी स्टोर होगा. लेकिन इंडेक्स में कौन सी चीज स्टोर होगी? सिर्फ और सिर्फ जिस वैल्यू के ऊपर इंडेक्स क्रिएट की गई है. हमने एग्जांपल लिया कौन सी वैल्यू? नेम की वैल्यू एंड टॉपिक की वैल्यू. टॉपिक इन द सेंस आपके बुक के एग्जांपल में टॉपिक होता है, टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है? नेम होता है. दैट इज द डेटा वैल्यू. Similarly, there might be a specific column on which the Oracle will create some index. So when the data is inserted in the table, two consecutive insert operations will be performed. One insert in the table and the other insert in the index. For every data held in the index, there is a unique रो आईडी वैल्यू. फाइन. तो जितने भी रिकॉर्ड्स आपके टेबल के अंदर हैं, हर रिकॉर्ड के लिए क्या होगा? एक यूनिक एड्रेस होगा. ये हर बार होगा. जितने रिकॉर्ड्स आप टेबल में डालोगे उतनी बार आपकी इंडेक्स में भी एंट्री होगी. ओके, दिस रो इंडिकेट्स एग्जैक्टली वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन योर टेबल. फाइन. सो जब भी आपका रिकॉर्ड की सर्चिंग परफॉर्म होगी तो सर्चिंग कहाँ पर परफॉर्म होगी? इट विल बी परफॉर्म ओनली विद इन द इंडेक्स, नॉट विद इन द table. So this makes the process fast of searching a record. And remember, the records in the index are sorted in ascending order. To make the search fast, sorting is always done. Now format of your address field. How does your address field look? So as I told you, address field means what? It is a row ID. Row ID is nothing but it is a binary value which identifies the record. The binary value means what? There might be some number which is represented in the binary format. The information in the row ID provides the Oracle engine location of the table, first thing, location of the table and the record in the Oracle database. Row ID are of two types, extended row ID and restricted row ID. There is nothing much difference between the two. Only the thing is that extended row IDs are supported by Oracle 8i and higher versions, whereas the restricted row ID is used for backward compatibility, that is Oracle 7. Fine. There is not much difference. Only the difference is that extended specifies which type of row ID, the row ID which is used in Oracle 8i and higher versions, whereas restricted row ID specifies the version for which Oracle type, Oracle 7. Now, how each time a record is inserted in the table, so there is a data block in the data file. So when you are entering some value, तो वर्किंग कैसे होगा? देयर माइट बी सम ब्लॉक, अ फुल ब्लॉक विल बी एलोकेटेड फॉर द फाइल. फाइल के लिए पूरा का पूरा ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा.
ठीक है, that is called data block, and within this data block there will be your table, and within this table there will be your records. So basically the Oracle stores the data in the form of what? In the form of file, and within that file there is your table. टेबल के अंदर क्या होगा? आपका एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होगा. ओके, सो एंट्री ऑफ द टेबल, this complete entry, the data file, then the table, then the record number, this complete thing is called your row id. So restricted row id format is what? Every data file is given a unique number. The Oracle engine uses this to identify your data file. Fine, for your table. अब डेटा आपका जो टेबल फाइंड करना है तो ओरेकल कैसे फाइंड करेगा? फाइल के थ्रू फाइंड करेगा. ठीक है, फाइल के थ्रू फाइंड करेगा, एंड उसके अंदर वो क्या आइडेंटिफाई करेगा? टेबल, एंड टेबल के अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है? रिकॉर्ड. डज दिस मीन? नाउ बीबी इज व्हाट? each data file is divided into blocks. Fine, data file क्या है? It is divided into blocks which is given unique number, and the block number begins with 0. This is your block number, and within the block number there is records. Fine, each block number is used to identify the data block in which it is stored. BB is what? It is the block number in which the record is stored. Then within the record there is record number, that is RRR. This is your record number, and the file, and this is your file. फाइल के अंदर आपको क्या करना है? ब्लॉक. ब्लॉक के अंदर क्या करना है? रिकॉर्ड को फाइंड करना है. इसी तरीके से हर एक इंडेक्स की वैल्यू स्टोर्ड होगी. See, over here the best example you can get, there is a table sales order having which values? Order number, order date, and client number. I am creating an index on client number. Okay, so which value will be stored in your index? Only the client number will be stored in your index. So this is your index. ये कौन सी चीज है? आपकी इंडेक्स है. अब इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? क्लाइंट नंबर, एंड दीज क्लाइंट नंबर रिप्रेजेंट द एक्चुअल address. Fine, in the example of books I told you the topic and the address. Similarly in this example index I am storing only the client number and its respective row id. That means what? ये client number 1 है, वो कहाँ पर stored है? इस address पे stored है. and address कौन सा है? address में सबसे पहली चीज क्या है? block number है. first thing, this is your block. then file. तो अब ट्रैवर्सिंग कैसे करनी है? फाइल नंबर 4 के अंदर कौन सा ब्लॉक के अंदर? 240 ब्लॉक के अंदर कौन सा रिकॉर्ड है? फर्स्ट रिकॉर्ड. दीज क्लाइंट नंबर 111, देर आर 3 रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट नंबर 1. दैट मीन्स व्हाट? आपका ये जो 3 वैल्यूज हैं अलग अलग रिकॉर्ड के अंदर स्टोर्ड होंगी. दैट इज 0, 2. Fine, this is in which block? It is in block 240, and the third value is in next block, that is 241, and उसका रिकॉर्ड नंबर क्या है? 2 है, एंड फाइल तो सभी की सेम है, 444 ही है क्योंकि ये एक ही टेबल है. So one table, one file. Now how can you create index? Index can be created on one column or more than one column. And based on the number of columns, the index can be simple index and composite index. Based on duplicate value, inclusion and exclusion, the index will be unique index and duplicate index. दो तरीके की index हो सकती है. So create unique. Unique is optional keyword. If you are including this unique means what? Duplication will be totally removed. Then index name on table name. Fine. तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही कॉलम का नाम लिखा है, इसीलिए ये कौन सी इंडेक्स हो जाएगी? सिंपल इंडेक्स हो जाएगी. अगर आप यूनिक कीवर्ड इंक्लूड करते हो तो डुप्लीकेट वैल्यूज क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी. फाइन. अगर आपको कॉम्पोजिट वैल्यू क्रिएट करनी है, कॉम्पोजिट इंडेक्स क्रिएट करनी है, तो यू कैन स्पेसिफाई मोर देन वन कॉलम नेम. Always I have said that there are objects which are to be created
and which gets stored in the database. Up till now, how many objects we have learned? We have learned object name, table, cursor, sequence, views, and this fifth is your index. इंडेक्स भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? क्रिएट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं. एंड आपका इंडेक्स जगह ऑक्यूपाई करेगी, तो आपको क्या करना है? अगर आपको ज़रूरत नहीं है इंडेक्स की, तो आप क्या कर सकते हो? उसको ड्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग विच कमांड? ड्रॉप इंडेक्स कमांड. I hope that you got the topic of index. It is not going to be implemented practically, but you can implement if you want. And ये चीज़ आपका better performance कहाँ पर देगा? In case of multi-user environment and when you are working with very big amount of data. It is not going to show any performance in case of 10 or 20 records. Okay. Hope that you are clear with the topic of index. Thank you.